हेलो स्टूडेंट, तो आज इजी लर्निंग में विल सी द सेकेंड दैट इज द लिम्फ कैपिलरीज. ओके, तो लिम्फ कैपिलरीज क्या होता है? तो लिम्फ कैपिलरीज lie very close to the blood capillaries, but differ from them. क्यों? As the end blindly in contact with the body, with the body cells or the tissue spaces. Clear? The lymph always flow from the tissues. Flow from the tissues towards the lymph herds. और क्या होता है कि इसका वॉल जो होता है, their walls कैसा होता है? their walls are extremely कैसा होता है? their walls are extremely thin होते हैं, thin and क्या होते हैं? permeable होते हैं ना, thin होते हैं and permeable होते हैं to colloids. ओके, टू कॉलोइड्स या फिर हम लोग कह सकते हैं क्रिस्टलोइड्स. ठीक है, एंड क्या हो जाएगा? वाटर. क्लियर? सो इसका वॉल्स क्या होता है? कॉलोइड्स होता है, क्रिस्टलोइड्स होता है एंड वाटर होता है. नेक्स्ट, ये जो होते हैं दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट शेप. they do not have what? तो they do not have a constant shape. ओके, लिम्फ कैपिलरीज का कांस्टेंट शेप नहीं होता है. दे डू नॉट हैव अ कांस्टेंट शेप. एंड देन द लिम्फ कैपिलरीज जो होते हैं, द लिम्फ कैपिलरीज of the intestine transport the digested fat. ओके, जो कि क्या है? which does not pass through blood stream directly. Clear? Because these capillaries contain fat. क्या कंटेन करते हैं? ये कंटेन करते हैं फैट को. they appear milky white. okay, hence are termed as, क्या बोलते हैं? बताइए, क्या बोलेंगे इसको? लैक्टियल्स, है ना. लैक्टोज का मतलब क्या होता है? मिल्क. तो लैक्टियल्स बोलते हैं क्योंकि इसके पास मिल्की वाइट फैट प्रेजेंट होते हैं. ओके, द थर्ड वन इज द लिम्फ साइनसेस. तो नाउ लेट्स सी द लिम्फ साइनसेस. लिम्फ साइनसेस क्या होगा फिर? इन द फ्रॉक्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रॉक्स, इजंट इट? तो इन द फ्रॉक्स lymph vessels
आर नॉट फाउंड, लिम्फ वेसल्स इसमें क्या होते हैं, नॉट फाउंड, नहीं मिलते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ दीज वेसल्स, इंस्टेड ऑफ दीज वेसल्स, इंस्टेड ऑफ दीज वेसल्स क्या होता है बताइए. इंस्टेड ऑफ दीज वेसल्स यहाँ पे थिन वॉल्ड स्पेसेस होता है. देयर आर प्रेजेंट थिन वॉल्ड स्पेसेस, और जिसको हम लोग लिम्फ साइनसेस कह सकते हैं. ओके, लेट मी चेंज द पेज. ओके, लिम्फ साइनसेस कहते हैं, क्या कहते हैं, और लिम्फ साइनसेस, और क्या बोलते हैं, लिम्फ साइनसेस कहते हैं अराउंड द टिश्यूज, अराउंड द टिश्यूज. क्लियर, अराउंड द टिश्यूज. Also, and between the organs. Okay, next point, the important lymph sinuses are, कौन सा है बताइए, subcutaneous sinuses, subcutaneous sinuses and subvertebral sinus. Okay, so next we'll see lymph sinuses के बाद क्या है, lymph herds. तो डी है हमारा lymph herds. तो ये क्या होता है, तो there are present two pairs of what, two pairs of thin walled muscular lymph herds, okay. One pair is located behind the transverse processes transverse process of third vertebra, and the other is situated where, in the region of urostyle. Clear? So क्या होता है कि the flow of lymph is from the lymph capillaries. Okay, from lymph capillaries से कहाँ जाएगा, lymph sinus, वहाँ से lymph herds, okay, and then veins. Clear? Okay, so spleen के बारे में लिखते हैं. spleen क्या है, तो ये जो है, it is a dark red oval structure lying near the
नियर द एंटीरियर एंड ऑफ द रेक्टम। ओके, ये प्रोड्यूस क्या करता है, तो इट प्रोड्यूसेस RBCs and WBCs, red blood cells and white blood cells in adults too. क्लियर? और क्या करता है, इट स्टोर्स ब्लड। क्लियर? तो ये स्टोर करता है ब्लड को, हेंस व्हाट इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, ब्लड बैंक। ठीक है, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, अंडरलाइन दिस ऑल्सो। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम। नाउ लेट्स सी द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग है ना। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि द नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग जो है, द नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग is divisible into 3 parts. Okay, so 3 parts में ये divided होता है। कौन कौन से, one by one we'll see. The first one is central nervous system. Central nervous system. तो central nervous system क्या होता है, ये comprises the brain। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, सो अंडरलाइन दिस। इट कंप्राइजेस द, ये क्या कंप्राइजेस करते हैं, द ब्रेन एंड व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, एंड स्पाइनल कॉर्ड। द सेकेंड वन इज व्हाट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि द नर्व्स जो होते हैं, द nerves arising from the central nervous system from the central nervous system से constitute the peripheral nervous system. Peripheral nervous system. Clear? The third one is what? Tell me. The third one क्या हो जाएगा आपका? Yes, third one will be autonomic nervous system, है ना। तो third one is autonomic nervous system. Autonomic तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा, ये इंक्लूड्स करेगा नर्व्स। इट इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करेगा, इट इंक्लूड्स नर्व एंड गैंग्लिया। यस, एंड गैंग्लिया दैट कंट्रोल करेगा क्या, दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट। ओके, ये कंट्रोल करेगा और कोऑर्डिनेट करेगा such organs which are not under what, voluntary control. Okay, not under voluntary control. So क्या होता है, ये कंप्राइजेस, जैसे आपका सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्फेटिक नर्वस सिस्टम है। जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू स्टूडेंट।